Assalamu alaikum students. Today I'm doing question number 2 of exercise number 7.3, which is at page number 141. As you have done inequalities question in question number 1, again question number 2 is solve the following inequalities. Okay, you know inequalities may you have this less than or greater than, less than or greater than, they such signs are present, right? So here you have seen I am reading this question as -4 I will read it from the middle, that 3x plus 5 is less than 8 and it is greater than -4. You will always read such type of questions from your middle term, okay, middle portion, that is 3x plus 5 is less than 8 and greater than -4, or you can read 3x plus 5 is greater than -4 and it is less than 8. Again students, there are two methods to solve this first part, these equations, not equations, inequalities. I am doing this by first method, okay. फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन करती हूँ, आफ्टर दिस सेकेंड मेथड, देन आप लोगों की मर्ज़ी है फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और बाय सेकेंड मेथड, बट आई विल प्रेफर टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स बाय माय फर्स्ट मेथड, ओके. In this method there are less chances of mistake, okay. Challenging. What is first method students? I have to break this whole expression into two parts. Always read from here, okay, and I will break from this side, that is -4 is less than 3x plus 5 and 3x plus 5 is less than 8. Okay students, what I have done, मैंने break कर लिया first -4 को with this term and then continue किया this term with the next term, okay. Now see, you have done such type of questions in your question inequalities in question number 1, so it is very easily now for you people to solve such type of inequalities, okay. So it becomes -4, it becomes -4 minus 5 is less than 3x and -9 is less than 3x, -9 by 3 is less than x and 339. So यहाँ क्या आ जाएगा, -3 is less than x, okay. Very simple. Now it's this part, 3x is less than 8 minus 5, 8 minus 5 is 3 and x is less than 3 by 3, x is less than 1. I got these two values of x, okay. First is -3 is greater than -x is greater than -3. देखिए यहाँ पर मैंने डिवाइड किया बाय माय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अ पॉजिटिव नंबर्स 3, so sign of inequality is not changed, and here again I have divided by my positive number, so sign of inequality change नहीं हुआ, ठीक है. This I explained you in very detail in my previous video, that is why I am not explaining too much over here, ठीक है. So students, I am writing its solution set. Solution set is very important, okay. Solution set कैसे लिखेंगे, it will be in the form, always remember students, you will start x such that x, okay, oh not x should be written in the middle, right, middle में लिखना है. In this side you will write this less than inequality and over here you will write greater than, ठीक है. एक in other words you can say this is a standard form of your solution set, ठीक है. तो क्या हो जाएगी standard form of solution set, ये हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखें किस तरह से लिखते हैं. हमेशा
is on your right hand side less than लिखेंगे and on your right hand side x greater than. अब values put करनी है. Look, x is less than 1, तो less than 1 आपने यहाँ put कर दिया and x is greater than minus 3. X is greater than minus 3. ओके, तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया. जस्ट हमने यहाँ से रीड स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख ली. यहाँ 1 लिखा है एंड ओवर हेयर आई रोट -3. सो आई होप this is clear to you. Now I am doing its second part. Okay, now students, its second part is -5 is less than or equal to 4, -3x upon 2 less than 1. Okay, start reading from here. 4 minus 3x upon 2 is less than 1 and it is greater than or equal to -5. Solution. In solution, yes, again, sorry students, I forgot to explain you its second method of first part. So first I have to explain. Sorry, I forgot. Sorry. First part and its second method. It's fine. After this I will do its second part. Students, second method is you will shift, obviously you need this value of variable, so you will shift this constant to both sides. Okay, 3x will be here, and when you shift this plus 5 to other side it becomes -5, and when you shift this 5 to the other side it becomes -5. -9, 3x greater than 3, so dividing both sides by 3, here 3 and 3, so -3 is less than x less than 1. Therefore solution set is equals to x is less than 1 greater than -3. This is very simple inequality, so you can solve it very easily, but when you have questions in the form of fraction, then there maybe there will be some difficulty level for you people. So this is your second method. मैं फिर यही कहूँगी students कि आप फर्स्ट मेथड ही फॉलो करें. वहाँ पर आपके मिस्टेक्स के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं. ठीक है, यहाँ हो सकती है. दिस इज़ सिंपल, ये हो जाता है, बट इन अदर प्रॉब्लम होगी. Solution. Okay, again I am reading from this middle portion, that is 4 minus 3x upon 2 is less than 1 and greater than or equal to -4. I am going to break this in this form. -5 is less than or equal to 4 minus 3x by 2, and then again from here यहीं से start करूँगी. यहाँ से लिखना शुरू किया मिडल टर्म तक एंड स्टॉप कर दें, एंड देन सेकेंड पोर्शन में, सेकेंड पार्ट में is less than 1. ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक and then from here till this one. So first I am solving this portion. ठीक है, multiplying both sides by 2. तो students obviously 2 is a positive number. ओके, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इस 2 को बोथ साइड्स पे, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 -4 इज़ लेस देन -3x, -14 इज़ लेस देन -3x. और यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या फॉर्म बनती है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 एंड 2 -4 -2. all right,
Now your target is to find the value of x, right? So यहाँ क्या करेंगे, you will divide both sides by -3. Students, I hope this is clear to you. Only the main thing you have to learn for your question number 2 is how to write it in this inequality into two parts like this. ठीक है, आपने ये लिखना है ये. Then again it becomes your like your question number 1, and in question number 1 I have explained you in very detail that when you multiply by a positive number or by a negative number, inequality will be changed. ठीक है, तो वो मैं यहाँ I'm not explaining too much in this part. Now students, I got -14 is less than or equal to -3x and -3x is less than -2. मैं ये ऊपर लिख रही हूँ रेस करके, so that मैं आपको easily explain कर सकूँ. -14 is less than -3x, and over here challenge. Now students, I can write it as with or, the word or, okay, or you can divide it both sides by -3. उस तरह से भी आप कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं. और करके मैं नहीं लिखवाती, इसी तरह से करवा देती हूँ. Now students, your target is to separate this x from this -3. So you will dividing both sides by -3. Oops. Look students, here I am dividing both sides by -3 negative number, so this inequality will change. Okay, x की तरफ क्या है, if I read it from x की तरफ से आप read करें तो क्या होगा, -3x is greater than 14, so this greater sign will change into less than. Towards x students, आपने x की तरफ always your target is to read from x. ठीक है, देखिए -3x is greater than 14, so when I divide both sides by negative sign, my this inequality will change. x की तरफ क्या था, इसका इसके फेस की ओपनिंग ग्रेटर है. नाउ टूवर्ड्स x इट्स ओपनिंग बिकम्स क्या हो जाएगी, आपके पास क्लोज्ड हो जाएगी. ठीक है, लेस देन हो जाएगी. सो 14/3 is greater than x, or x is less than 14/3, right? Then इसको मैं सेकंड भी और करके भी लिख सकते हैं. और स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे लिखेंगे, x if I read it from here this x, तो कैसे पढ़ेंगे, x this is close end, so it means it is less than. ठीक है, x की तरफ इसका फेस जो है वो closed है, so less than 14/3, right? Now come to this portion, it's dividing both sides by -3. Look, this sign will change into greater 2/3. Okay, now the time of writing solution set. Solution set मैं इस तरह से लिख देती हूँ, x such that okay students, what I have explained you that first write it in standard form. Okay, in standard form. Students, यहाँ पर कुछ less than और ये क्या था, to this sign was I think this was this sign, and the other, yes, I forgot to write. Please अगर मैंने पीछे नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा. ये हमारे पास आता है on my when I break on this side, तो यहाँ पर ये less than और equal का भी साइन आ रहा था. प्लीज़ डू राइट. ठीक है, on my left hand side, right hand side पे only आपके पास inequality आ रही थी. ठीक है, less than की, वहाँ equal नहीं था. So students, what I am telling you is that you will write it in standard form, that always write x in the middle, this is less than, and over here you will write greater than.
लुक x इज़ लेस देन, ये देखिए एंड क्लोज्ड है लेस देन का, एंड यहाँ पर दीज देयर इज़ ओपनिंग ऑफ दिस साइन, सो इट इज़ opening shows greater and this close end shows less than. Now here I have seen x is less than or equal, so here I am putting equality sign because in question it is present. ठीक है, this is your left hand side of question, तो वहाँ पर हमारे पास ये आ रहा था, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x is less than or equal to 14/3, ये देखिए, and x is greater than 2/3. Oops. Sorry. So this is your solution set. I hope students ये solution set आपको थोड़ा बहुत लिखना आ गया होगा. If not, no problem. मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी सॉल्यूशन सेट लिखना, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू दिस सॉल्यूशन सेट तो आप बच्चे कर सकें, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम नॉट डूइंग इट्स थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। दे आर वेरी इजी एंड दे आर लाइक योर सेकेंड पार्ट, इसलिए सेकेंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ के कीजिएगा, सो दैट देन यू विल बी एबल टू डू इट्स third and fourth part. Now students, I am doing its fifth part. Three x minus 10 is less than or equal to 5 less than x plus 3. Okay, again students, मैंने आपको कहा था कि आप ब्रेक कर लें इसको, ठीक है। किस में ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, आप मिडल टर्म इस पोर्शन को एक बार लिखेंगे, देन मिडल को नेक्स्ट राइट हैंड साइड के साथ लिखेंगे। सो 5 सेमीकॉलन एंड x plus 3। चलें जी, ट्रांसपोर्टेशन 5 plus 10 so dividing both sides by 3, look it is a positive number, ठीक है, positive number है, so inequality will not change, so x is less than or equal to 5. Now come to this part, 5 minus 3 is less than x plus 3 को I shift from here to here, so yes, shift किया from this side right hand side to my left hand side, so 2 is okay. Now the time of writing its solution set, चलें जी, x such that okay x should be in middle, here less than and here you have greater than sign, okay। चलें जी, वैल्यूज पुट करते हैं, रीड करेंगे फ्रॉम दिस पार्ट, x इज़ ग्रेटर देन 2, लुक x की तरफ आपके पास ओपनिंग है, ठीक है, वाइड ओपनिंग है ऑफ दिस साइन, सो x इज़ ग्रेटर देन 2, तो कहाँ आएगा वाइड ओपनिंग कहाँ है, x यहाँ मिडल से, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ इक्वालिटी भी साइन डाल देंगे, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट देन डालेंगे, अदरवाइज़ वो लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू 5. सो दिस इज़ योर सोल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ आई एम डूइंग इट्स सिक्स्थ पार्ट, ओके okay. Now students, it's sixth part, minus 3 is less than or equal to x minus 4, oh sorry, I will read, मुझे यहाँ से read करना चाहिए, x minus 4 upon minus 5, it is less than 4 and it is greater than or equal to minus 3, right, this is sixth part. Students, I am doing this part because I have a negative number on my
इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। सो मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो जाएं, दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग दिस पार्ट फॉर यू इन सोल्यूशन। चलें जी, सोल्यूशन में स्टूडेंट्स यू विल ब्रेक दिस, ठीक है। आई होप ये ब्रेक करना आपको आ गया होगा, ठीक है। मिडिल टर्म को एक बार लिखना है विद लेफ्ट हैंड साइड, एंड अगेन मिडिल टर्म को यू विल राइट विद योर राइट हैंड साइड, ठीक है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड के साथ लिख लें, एक बार राइट हैंड के साथ। सो मल्टीप्लाइंग हेयर -5, ठीक है। So students, here I am multiplying, I am going to multiply it with a negative number. This is a negative number, okay. So negative number se when you multiply it, then obviously you will get your signs of inequality will change. Look, I am doing so it becomes plus 15, and inequality, this inequality towards x, it is greater than or equal, then it becomes reverse हो जाएगी, ठीक है। x वाली साइड पे रिवर्स करनी है, इस साइड पे भी कर सकते हैं, -3 इज़ लेस देन और इक्वल, और ये ग्रेटर हो जाएगी, और इस साइड पे भी रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास 15, दिस इज़ कैंसिल, so 15 plus 4 is greater than or equal to x, or 15, 16, 17, 18, 19, 19 is greater than or equal to x is less than this portion. So again I am multiplying this portion, I am doing this portion, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5 से मल्टीप्लाई कर लें, is less than my, oops, sign will change again, sorry, I forgot, it's a negative number, less than will change into greater than. So x is greater than 2, no, 4 5 is 20, sorry, 20 plus 4 and minus 16, sorry students, I forgot. 4 5 times 20 minus 20, and then when I shift this minus to the other side, it becomes plus 4 and minus 16. Okay, now the time is क्या है, आपने लिखना है its solution set, okay. So I am writing solution set with this blue marker so that आपके लिए ये ज़्यादा क्लियर हो। सोल्यूशन सेट, चलें जी, सोल्यूशन सेट में स्टूडेंट्स आपने कैसे लिखना है, x मिडल में होगा और हेयर लेस एंड दिस साइन, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखा था इसको भी मैं ऊपर करके लिख लेती हूँ। 19 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x, एक ये आंसर आया था और एक ये आंसर आया था, ठीक है। देखिए आप स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस साइड, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 19, यहाँ ढूंढे कहाँ पर लेस देन का साइन है, ओवर हेयर लेस देन साइन इज़ प्रेजेंट, सो यस लेस देन और इक्वल, इक्वालिटी भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने साइन डालना है, अदरवाइज लेस देन और ग्रेटर देन छोड़ना है। x is less than or equal to 19, देखिए x is less than or equal to 19, and over here x is greater than -16, तो ये देखिए x greater opening, x is greater than -16, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स से आपको क्लियर हुआ होगा, मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। x is less than or equal to 19, तो देखिए x less than or equal to 19 and x is greater than, तो ये देखिए greater than -16. This is your solution set of 6th part. I hope students ये आपको clear हो गया होगा. Now I am doing its 7th part. Okay.
बस 7th करूँगी, 8th you will do yourself, right? What is its 7th part? 7th part is, students, book. Where is my book? Yes, 7th part is okay, this is my 7th part. Again, students, I will write it in 2 parts. First, I will write this middle term with this left hand side, and again this middle term with my right hand. So, look students, मैंने यहाँ क्या किया है, मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म को एक बार लेफ्ट हैंड साइड के साथ लिखा और मिडल टर्म को एक बार मैंने राइट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ एंड राइट हैंड साइड के साथ. गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन. प्लस एक्स इज़ लेस देन 5 minus 1, minus x is less than 4, and over here minus x plus 6x is less than or equal to 25 minus 5, 5x is less than or equal to 20. Now students, here I need only x, not negative of x. So multiplying both sides by minus 1, minus 1 into minus x. This type of question you have done in in question number 1. Okay, so वही मैं कर रही हूँ, x, oops sorry, again multiplying with a negative number. I am multiplying it with a negative number. This is a negative number. I forgot to change signs. Less than will change into greater than, reverse कर लेना है, ठीक है. So greater than, x is greater than किससे आ जाएगा मेरे पास, ये -4. ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप स्टूडेंट्स को, दैट x इज़ ग्रेटर देन -4. नाउ कम टू दिस साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है. सो x इज़, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. x इज़ 4 less than or equal to. I hope students this is clear to you. Very simple, just remember first you will write in 2 parts, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर योर इनइक्वालिटी विल चेंज. इफ़ यू डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर योर इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. ओके, नाउ कम टू इट्स सोल्यूशन सेट. सोल्यूशन सेट की तरफ हम चलते हैं. इसको मैं ऊपर लिख लूँ. All right, solution set. All right, what is standard form? इधर less लिखना है और इधर आपने greater लिखना है x, ठीक है. Now read from your answers, from your results. x is greater than -4, ठीक है. तो यहाँ x कहाँ पर है? x is greater than -4, यहाँ आ जाएगा. एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू, तो ये इक्वालिटी साइन है आपके पास, लेस देन और इक्वल टू 4. स्टूडेंट्स, मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखें, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म. ये भी मैं नहीं लिखती, लेस एंड ओवर हेयर ग्रेटर. सो रीड करेंगे फ्रॉम योर आंसर दैट x इज़ ग्रेटर टूवर्ड्स x. देखें, ये आपके पास ओपनिंग जो है आपके पास ज़्यादा है. सो x इज़ ग्रेटर देन -4 एंड यहाँ पर ओपनिंग आपके पास क्लोज्ड है, इसकी एंडिंग जो है.
so less than or equal. So this is your seventh part of your exercise number 7.3 question number 2. Last part students I am not doing, it is very simple, again it's like your seventh part. Do this part yourself, okay. So with this question number 2, your exercise number 7.3 is yes is completed. And बस students मैं यही कहूँगी कि for understanding or for doing this exercise 7.3, you have to remember the simple rule that whenever you multiply or divide an inequality by a positive number, by a negative number, your inequality, sign of inequality will change और रिवर्स, ठीक है. पॉजिटिव से फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव से फ़र्क पड़ेगा. सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.